lectures of linear algebra. So first we study what is linear algebra and what are the application of linear algebra. So linear algebra is actually the branch of mathematics which deals with the matrices, system of linear equations, vectors, vector spaces, linear transformations, eigenvalues, and eigenvectors. Why linear algebra is in computer science? So the linear algebra is in computer science because it has a large number of applications in computer science. The applications of linear algebra in computer science are in the fields of computer graphics, machine learning, artificial intelligence, data science, image processing, cryptography, and in so many other fields as well. We will study and discuss all these applications later on. So in the first part of linear algebra, we are going to study matrix and different type of matrix. So first we are going to define what is matrix. Matrix is actually the arrangement of objects or numbers in the form of rows, in the form of columns, and in the square bracket. So such arrangement of numbers are known as matrices. The matrices are represented by the capital English alphabets like A, B, C, while the elements are the objects in the matrix are denoted by either the small English alphabets or by the numbers, etc. In a matrix in simple words, मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स की इस तरह की अरेंजमेंट जो रोज के शक्ल में हो, जो कॉलम्स की शक्ल में हो और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो, तो ऑब्जेक्ट्स की इस तरह की अरेंजमेंट इज नोन एज ए मैट्रिक्स। और नॉर्मली जो मैट्रिक्स है वो हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है वो हम या तो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं या लेटर से डिनोट करते हैं। I hope you understand the definition of matrix. Now, what is order of a matrix? So the order of a matrix is actually the number of rows, the number of columns in a matrix is known as the order of matrix. यानी एक मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। And normally it is denoted by m cross n, जिसमें m रो को डिनोट करता है और n कॉलम को डिनोट करता है। So generally the order of matrix can be written as m cross n, where m is for the row and n is for the column. नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। Look at on the top of the slide, we have three examples. In the first example, we have a matrix having two rows and three columns. So its order is 2 cross 3. In the second example, we have a matrix who has three rows and one column. So its order is 3 cross 1. And in the third example, we have a matrix having four rows and four columns. So its order is 4 cross 4.
So I hope you understand the concept of the order of matrix. Let's discuss some basic types of matrices. The first one is what is row matrix and what is column matrix. So row matrix is actually ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें सिर्फ वन रो हो, दैट इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस तरह का मैट्रिक्स कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, सो दैट इज नोन एज ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स में सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, सो दैट इज रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नाउ we are discussing what is null matrix or zero matrix. So null matrix is actually a matrix having all entries are zeros. यानी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके तमाम एंट्री जीरो हो, so such matrix is known as a null matrix or zero matrix. An example, we have a matrix having two rows and four columns, but as all the entries are zero, so that is why this is known as a null matrix. In the third definition, we are going to study what is square matrix. So square matrix is actually ऐसा मैट्रिक्स के जिसमें एक जितने रोज हो और एक जितने कॉलम्स हो, so such a matrix is known as a square matrix, or in other words, a matrix having equal number of rows and columns are known as a square matrix. So in the first example, we have a matrix having two rows and three columns. So the number of rows, number of columns are equal. And in the second example, we have a matrix having three rows and three columns. So both are the examples of the square matrix. Some particular cases of square matrix. The first one is the diagonal matrix. In a diagonal matrix क्या है? इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल पे एंट्रीज नॉन जीरो हो और उसके अलावा बाकी सारे एंट्री जीरो, so such a square matrix is known as diagonal matrix. In example number 1, we have a matrix whose order is 2 cross 2, but if we look here in the diagonal we have the elements non-zero and all the other elements are zero. And the second example, we have 3 cross 3 matrix. So all the diagonal entries are non-zero and the entries other than the diagonal entries are zero. So the second one is also the example of the diagonal matrix. Now we are discussing what is scalar matrix. तो स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली इस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है कि जिसके डायगोनल पे एंट्रीज एक जैसे हो। यानी अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो डायगोनल पे 3 3 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो से। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो डायगोनल पे एंट्रीज के है, यानी सारे सेम है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। सो दैट इज व्हाई द सेकंड इज example is also the scalar matrix. The third is the identity matrix or the unit matrix. तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का स्केलर मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 हो। सो अ मैट्रिक्स whose the diagonal entry 0,
So such a matrix is known as the identity matrix or the unit matrix. These are the examples of identity matrix. An example number one, we have I2. I2 stand for the identity matrix having two rows and two columns. यानी फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है. तो this is one of the example of the identity matrix. The second example of the identity matrix is I3. I3 mean I is a matrix and 3 is a mean a matrix having three rows and three columns. So if we look in I3, all the diagonal entries are 1 1 and all the other elements are 0. So this is another example of the identity matrix. Now we are going to study what are equal matrices. So from the words it is very much clear. Equal matrices. Two matrices are said to be equal matrices if they satisfy two conditions. One is if they have same order and the other is their corresponding entries are same. यानी इस तरह के दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे कि जिसके ऑर्डर सेम हो. यानी एक मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हो एग्जैक्टली दूसरे में भी उतने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होने चाहिए और इसके अलावा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए. तो अगर किसी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, so such matrices are known as equal matrices. So in the example we have two matrices A and B, both are equal matrices. Now we are discussing the negative of a matrix. So the negative of a matrix A denoted by minus A, and it is actually the matrix formed by replacing each element in the matrix with its negative or additive inverse. यानी इस तरह का मैट्रिक्स कि जिसके सारे एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो उसी मैट्रिक्स का जो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा. अगर हम दोनों यानी मैट्रिक्स और उस पर होगा यानी जीरो के बराबर होने का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स बनेगा कि जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो. सो दिस इज about the negative of a matrix.